Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well and taking good care of yourself. Well, this is going to be your sixth lesson, and in this lesson we will discuss remaining part of chapter number 1 of unit number 6. The material required in this lesson is lead pencil, eraser, ruler, highlighter, social studies textbook, social studies workbook. Well students, as you know, in the previous lesson we have discussed government's most important duty. We need government to protect our rights. A government help us to feel secure. We also read about rights and responsibilities of Pakistani citizen. Being honest to Pakistan, laws are made and enforced by governments. Here are some learning objectives. By the end of the lesson, students will be able to know about why do we need laws, what is democracy, voting, and important people in the government. Now we are going to start the remaining part of chapter number 1, what is government. Open page number 68, write day, date and today's task at the top of the page. Why do we need laws? Laws are made to protect people. How do laws protect us? There are traffic lights on each crossroads. The red light means stop. When the red light is on, the law says you must stop. If you drive through a stop sign, you might hit another car or bike coming from the opposite direction. You or the people in the other car might be injured or even killed. लॉज हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? लॉज हमारी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं. लॉज हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हर रोड पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं. जब रेड लाइट ऑन हो तो इसका मतलब रुकना है और लॉज के अकॉर्डिंग आपको रुकना होगा. अगर आप स्टॉप साइन पर चलते हैं तो ऑपोजिट साइड से आने वाली कार या बाइक से टकरा सकते हैं. आप या दूसरी कार में बैठा हुआ पर्सन जख्मी भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है. Here is another example how laws protect us. You have saved your pocket money and bought a mobile phone with that money. The law says that the mobile phone is yours now. The thief likes the phone and wants to take it away from you, but this is against the law. The law protects you and your things. अब आप अपनी पॉकेट मनी सेव करते हो और उस मनी से मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो. लॉज के अकॉर्डिंग वो मोबाइल फ़ोन अब आपका हो गया है, लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन अब किसी भी चोर को अच्छा लगता है, पसंद आ जाता है, वो आपको उससे दूर करना चाहता है, तो ये लॉज के ख़िलाफ़ होगा. इस तरह जो लॉज हैं वो आपकी और आपकी चीज़ों की हिफाजत करते हैं. Here is another example. You own the plot next to your house. A man decides to build his workshop there. He cannot do that. It is against the law. The law says the property belongs to you. No one else can call it his own. He could be arrested. आप अपने घर के पास एक प्लॉट खरीदते हो और एक आदमी ने अपनी वर्कशॉप को वहां बनाने का फैसला किया है, तो ये लॉ के खिलाफ है. लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी आपकी है और कोई भी उसको अपनी नहीं कह सकता. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे अरेस्ट किया जाएगा. We need laws. If there were no laws, the people would be able to do whatever they wanted. They could even hurt or kill each other. We would live in the world where people would fight each other to get what they want. Highlight or underline the point. Laws ensure discipline, peace and harmony.
हमें लॉज की ज़रूरत होती है। अगर लॉज ना होते तो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते, यहाँ तक कि एक दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं या मार सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक की चीज़ हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। लॉज हमें बताते हैं कि हमने कैसे पुरअमन जिंदगी गुजारनी है विद डिसिप्लिन के साथ। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक ऐसी हुकूमत है जहां पर लोग इन्हें चूज करते हैं वोटिंग के जरिए। हाईलाइट और अंडरलाइन द पॉइंट, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी comes from two Greek words, demos meaning people and kratos meaning rule by the people. In our country, give power to the leaders by electing them. These leaders are given the power to help the people. There are many other democratic countries of the world. Look at the map to identify the other democratic countries of the world. हमारा मुल्क भी एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर वोटिंग के ज़रिए गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। हमारी कंट्री में हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। पाकिस्तान के साथ साथ और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कंट्रीज़। नाउ कम टू पेज नंबर 69, वोटिंग। किसी भी गवर्नमेंट के जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं वो वोटिंग के ज़रिए सिलेक्ट किए जाते हैं। A vote is a very powerful tool in the hands of a citizen of a country. Highlight or underline the point. Each citizen above the age of 18 can vote. They have to decide who is the best person and they have to vote for that person. Anybody who wants to be a part of the government and rule the country has to get the support of the people. People who like this person will vote for him or her. किसी भी मुल्क के शहरी के हाथ में वोट एक बहुत पावरफुल टूल होता है। 18 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज होती है वो वोट दे सकते हैं, जिनका आईडी कार्ड बन जाता है। वोट देने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन बेहतरीन शख्स है और उसको वोट दिया जाता है। अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहता है या मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहता है तो उसके लिए उसे लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। फिर जो लोग जिसको पसंद करेंगे उसी को वोट देंगे। Only one vote can be cast by each person for their favorite candidate. This is called one man, one vote. Highlight or underline the point. Voting is done through secret ballot. Nobody knows who you are casting your vote for. You cast your votes to elect members of the National Assembly and provincial assemblies. The national or federal government is formed by the members of the National Assembly and it meets in the federal capital Islamabad to discuss important issue. कोई भी पर्सन अपने फेवरेट कैंडिडेट को एक ही दफ़ा वोट डाल सकता है और हम इसे वन मैन वन वोट कहते हैं। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोटिंग की जाती है और कोई भी नहीं जानता कि आप किसके हक में अपना वोट डाल रहे हैं। हम नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए वोट देते हैं और सब इम्पॉर्टेंट इश्यूज इस्लामाबाद में डिस्कस किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पीपल इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में दो तरह के लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं यानी कि वजीर आज़म, और हेड ऑफ द स्टेट हम प्रेसिडेंट को कहते हैं यानी कि सदर। The head of the government is the prime minister. He makes all the important decisions of the company after discussing it with the National Assembly. All decisions are reached through mutual consent. Another important person is the president. He is a ceremonial figurehead, which means he isn't directly involved in decision making on many matters but is there as a symbolic head. The president has to sign on bills
and decisions once they are decided by the National Assembly. Highlight or underline the point. The Prime Minister appoints ministers in each province. However, the ministers are shortlisted for each province based on the votes they get. These ministers make sure that the matters of each province are run smoothly. कौमी असम्बली के तमाम मेंबर्स से बात करने के बाद ही वजीर आज़म डिसीजन करता है। प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल हेड होता है जिसका मतलब एक बराए नाम ओहदा। वो बहुत सारे डिसीजंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन नेशनल असम्बली के डिसीजन के बाद सदर के इम्पॉर्टेंट बिल्स और फैसलों पर साइन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हर सूबे में वजीर मुकर्रर करता है। इन मिनिस्टर्स को वोट्स की बुनियाद पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है हर प्रोविंस के लिए, और इन मिनिस्टर्स ने ये देखना होता है कि हर प्रोविंस के तमाम मामला ठीक चल रहे हैं। Well students, take out your workbook, open page number 60. Write day, date and today's task at the top of the page. Rules and laws. What is the difference between rules and laws? Write in the correct column. Rules. Rules are less formal. Rules are made by groups and organizations like family, school, etc. Laws. Laws are formal. Laws are made and enforced by governments. Write 3 rules and 3 laws. Rules. Number 1, games rules. Number 2, traffic rules. Number 3, library rules. And the laws. Number 1, property laws. Number 2, security laws. Number 3, income tax laws. Let's have a quick review of today's lesson. Today we discuss about why do we need laws, what is democracy, voting and important people in the government. Okay students, I hope that you understood our today's lesson. So here is a short assessment for you so that you can assess yourself. The blank number 1 is laws ensure discipline, peace and dash. Number 2, our country is a dash country. Number 3, the dash appoints ministers in each province. Number 4, each citizen above the age of dash can vote. The chapter we are going to start in next lesson is chapter number 4, people who make us proud, and the topic in this chapter is a national hero. Dear students, this is the topic that I will teach you in next lesson. You have to go through from this topic. Now, this is the time for task to do. Your task number 1 is learn question answers of unit number 6, chapter number 1, 1 till 4. Task number 2 is learn and write the workbook page number 60. Every good conversation starts with good listening. Nothing compares to a beautiful conversation with a beautiful mind. Here are some ways by which you can nicely communicate with others. Number 1, wait your turn. Number 2, use polite words. Number 3, listen carefully. Number 4, cooperate with others. Number 5, make please and thank you part of your daily conversation. Well students, I hope you have understood each and every point of today's lesson. So inshallah we will meet in next lesson. Till then, Allah Hafiz.